Good evening, all of you. Audible? Yes, Yes, sir. Utkarsh. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay. Yes, sir. Good evening. Okay, Kaushal, ready for recording? ठीक है. So in the last lectures, we'll be discuss about views. Different types of views are there. Different benefit of views. So basically, in a database, you have to create a database. So that time, if you want some views for the users, and that time you have to apply the various things, different types of views. So basically, views means what? A view is a सेव एसक्यूएल क्वेरी दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ टेबल. जो टेबल रहता है आपका डीबीएमएस में, डेटाबेस में, उसके ऊपर हम क्यूरी अप्लाई करते हैं. इट कैन बी डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइनिंग द टेबल्स. तो उसमें से हम क्या करते हैं, डेटा को शो करते हैं. इट इज नथिंग बट द व्यूज. Virtual table is also there. Unlike a regular table, view does not store the data physically. Instead, it generates the data dynamically based on the underlining tables whenever it is required. It is a query. तो ये लास्ट टाइम हमने लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप्स से करिए हमने. सिंपल व्यू रहता है, कॉम्प्लेक्स व्यू रहता है. सिंपल व्यू मतलब क्या, बेस्ड ऑन द सिंगल टेबल. एक ही टेबल के ऊपर आप क्यूरी फायर करते हैं, उसको बोलते हैं सिंगल टेबल. सिंगल उसको बोलते हैं सिंपल व्यू. कैन बी यूज्ड टू मोर simplify the complex queries. Support DML, data manipulation language, operations like insert, update, delete if no group functions are used. उसके बाद कॉम्प्लेक्स व्यू भी होता है. इट इज बेस्ड ऑन द मल्टीपल टेबल और कॉम्प्लेक्स क्यूरीज. तो एक से ज्यादा टेबल पे आप जो भी क्यूरी फायर फायर करते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स व्यू. ऑफन यूज फॉर रिपोर्टिंग द पर्पसेस. तो इसका रिपोर्ट पर्पस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. जनरली डज नॉट सपोर्ट डीएमएल ऑपरेशन बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टेबल. बेनिफिट क्या है इसके, different benefits are there. Data abstractions, security, simplified queries, logical data independence. How to creating the view? तो उसके लिए आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ता है. क्रिएट व्यू, व्यू का नाम एज, सिलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू फ्रॉम टेबल एंड वेयर कंडीशन. तो ये क्रिएट स्टेटमेंट का क्या है, फॉर्मेट है. इसी से आपको क्यूरी लिखना पड़ता है. लेट्स सी हियर द क्यूरी in a view. Once a view is created, you can be query it like a regular table. So let's start from view name. Updating the views, some views can be updated directly, but it depends on how they are defined. तो यहाँ पे एक टेबल है, कंसिडर द टेबल नेम एम्प्लॉय. उसके अलग अलग कॉलम नेम में एम्प्लॉय आईडी, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी. You can be create a view to show only the employee in the IT department. तो अब इसमें हमें व्यू देखना है कि जिस डिपार्टमेंट में, जो डिपार्टमेंट आईटी है, उसके एम्प्लॉय कौन से ही हमें फाइंड आउट करना है. ठीक. तो क्रिएट व्यू आईटी एम्प्लॉय एज सिलेक्ट नेम. उसका नाम चाहिए, उसका सैलरी चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. ओके. वेयर, अभी यहाँ पे वेयर डालना पड़ेगा आपको. डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी. सो नाउ क्यूरी द व्यू आईटी एम्प्लॉय विल बी रिटर्न. तो यहाँ पे आपको क्या रिटर्न करेगा, ये दो लास्ट के रिटर्न, लास्ट के रिकॉर्ड रो शो करेगा. बिकॉज उनका डिपार्टमेंट क्या है, आईटी. देखो आया यहाँ पे बीओबी, ये वाला बुक एंड कॉलम, उसका सैलरी. तो in this way you have to create a view. It's very simply in a single table. So next topic यहाँ से करने वाले थे actually next lecture में. Okay, I will take the screenshot for one. First screenshot. For attendance.
Next is very important topic for to discuss. Joining databases और डेटाबेस टेबल एंड स्कीमा मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको जॉइनिंग करना है। तो अलग-अलग जॉइनिंग के टाइप्स भी रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉइनिंग मतलब क्या? जॉइनिंग डेटाबेस टेबल्स। Joining is a method used to combine rows from two or more tables based on a related column between them. This is a crucial in a relational databases where data is often spread across multiple tables. Joining ये एक्चुअली एक मेथड बोला जाता है. It will be combine the row from टू और मोर टेबल्स। तो एक से ज़्यादा टेबल के जितने भी रो रहते हैं, हम उसको कंबाइन कर पाते हैं जॉइन के कारण ऑन अ रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम और उसके रिलेटेड कॉलम भी हम कंबाइन जॉइन कर सकते हैं। दिस इज़ अ क्रूशियल इन आरडीबी डिस्कस तो आरडीबी कंसेप्ट है, उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लस सॉफ्टवेयर के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तुम सॉफ्टवेयर बनाते हो, तब आपको ये इस तरह के जॉइनिंग बनाने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं। Where the data is often spread across the multiple tables क्योंकि relational database बहुत important because the data will be the everywhere in your tables multiple table में रहता है अलग-अलग टेबल में डेटा रहता है तो उसको कॉलम को जॉइनिंग करना ही पड़ता है तभी आप उसमें से रिकॉर्ड फेच कर पाते हो अदरवाइज नहीं। So different types of joins are here inner join, left join, right join, full join, cross join तो ये सारे उसके अलग-अलग टाइप से ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जॉइन समझ में आया जॉइनिंग क्यों करना है? जॉइनिंग मतलब क्या होता है? ये कंबाइन करना, जॉइन करना है, टेबल दूसरे टेबल से जॉइनिंग करना है। तो जॉइनिंग का बेनिफिट क्या होता है कि आप इज़िली उनके जो भी रिकॉर्ड्स है, शो कर पाते हैं या फेच कर पाते हैं। ओके, दैट इज़ द मेन इंटेंशन फॉर देयर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइन्स एज़ फॉलोज़। फर्स्ट, इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या होता है? इनर मतलब क्या? इंटरनली। और व्हाट अबाउट द इनर? Retrieve the record that have matching the value in both tables. तो इनर मतलब क्या? 2 टेबल है सपोज़ ए और बी, उनके दोनों के रिकॉर्ड क्या हो रहे हैं? मैच हो रहे हैं, मैचिंग उनके वैल्यूज़ मैच हो रही हैं। तो ऐसे मैचिंग किए गए हुए वैल्यूज़ के रिकॉर्ड जो आते हैं उसको बोलते हैं इनर जॉइन। सेलेक्ट ए डॉट नेम, बी डॉट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयी। इनर जॉइन डिपार्टमेंट पी ऑन A dot department ID is equal to B dot department ID. यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है वापस से बना ठीक है इसमें अंदर नेम है डिपार्टमेंट नेम देन डॉट नेम बी डॉट डिपार्टमेंट दोनों को एनालाइसिस किया है। अब यहाँ पे इनर जॉइन क्या है? एम्प्लॉय इनर जॉइन डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट बी on A dot department ID is equal to B dot department ID. This query will be written the name of employee along with their respective department only for those employees who belong to a department. जिस डिपार्टमेंट से वो रहेगा वो डिपार्टमेंट का क्या करेगा रिकॉर्ड शो करेगा। So this is an inner join return the record that have matching the value in both tables. लेफ्ट जॉइन में जाता है और उसको बोलते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन। राइट लेफ्ट जॉइन इट इज नथिंग बट द लेफ्ट आउटर जॉइन बोलते हैं उसको।
retrieves all record from left table and match the record from right table. तो इसमें लेफ्ट साइड के जो भी टेबल रहेगा उससे वो मैच करेगा रिकॉर्ड राइट हैंड साइड वाले टेबल से, उसको बोलते हैं from right table. If there is a no match, null values are returned for the right table. अगर नहीं होगा तो क्या होगा, null values आएगा. Select A dot name, B dot department from employees. A left join department B on A dot department ID is equal to B dot department ID. This query return all employees. And if an employee is not associated with department, अगर employee associated नहीं होगा तो it shows the null for the department. उसी तरह राइट जॉइन में होता है राइट आउटर जॉइन, राइट join it is also called as a right outer join. Retrieve all record from the right table and match the record from left table. इसमें लेफ्ट टेबल की जो भी रिकॉर्ड है वो मैच होनी चाहिए राइट से. If there is a no match, then null value will be there. And right join, it is nothing but a right outer join. तो इसमें क्या होता है राइट टेबल एंड मैच द रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल, उसमें मैच द रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल. If there is no match, null value will be the same thing here. Same query will be there. So it is also you have to apply the on practically this. You have to better understanding also. Full join करते हो उसमें. Full क्या होता है? Full outer join मिलता है. So retry the all record where there is a no match in either left or right table records. It return null for a match row from both tables. Example, select A dot name, B dot department from employee, a full outer join department B on a department ID is equal to B dot department ID. Cross join. Produces a Cartesian product of both tables. Every row in the first table is combined with every row in the second table. So first row combined with every row in the second, for example. अब यहाँ पे क्या है डायरेक्टली, ठीक है, select A dot name B dot project from employee, a cross join project B. Means what? It will be the first table is combined with every row in the second table. मतलब पहला रो फर्स्ट टेबल इज कंबाइंड विथ एवरी रो इन द सेकंड टेबल की जो भी रो रहेगी उसको कंबाइन करेगा यहाँ पे. तो ये जो अलग अलग जॉइन है ये अलग अलग उसके जाते हैं इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, आउटर जॉइन और फुल जॉइन एंड क्रॉस जॉइन. तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एक्चुअली? इंपॉर्टेंस ऑफ जॉइनिंग द टेबल. डेटा रिलेशनशिप. Joining all use allows you to query related data that is stored in the different table, providing a complete view of the information. Data relationship के लिए important है. Joining allow you to query related data that is stored in a different tables. Second is about also different tables providing a complete view of the information. Normalized data helps maintain
normalize database which reduce redundancy and improve the data integrity. मतलब इसमें नॉर्मलाइज भी हो जाता है, मेंटेन द नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस आल्सो एंड रिड्यूस द डुप्लीकेशन, रिडंडेंसी जो बोलते हैं, एंड improve the data integrity. This is for the in joining different types of join is very important. It will be definitely ask the question in your theory paper for the joining related question. So please keep in your mind what exactly the joining here. Also, we'll be try to understanding the definition plus example of that. So it is a better to understanding of there. Schema modification. Schema modification refer to the process of changing the structure of database schema, which define how the data is organized within the database. This include creating, altering, deleting database objects like table, views, indexes, and relationship. The schema modification refer to the process of changing the structure of database schema. Schema modification to the process of changing the structure of the database schema, which define how the data is organized within the database. The data किस तरह से organize किया जाता है? This include creating, altering, deleting the database object like a tables, views, indexes, and relationships. Common schema modification operation, creating a table. Define a new table and its columns. Example, create table employee. Employee ID int primary key दिया, name varchar 100, department ID int, close. तो यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट किया है. Alter table. Altering the table means what? Changes the structure of an existing table. Structure change करना आपको, such as add, delete और modify the column. किसी न्यू कॉलम को ऐड करना है, किसी न्यू कॉलम को या एग्जिस्टिंग कॉलम को डिलीट करना है या मॉडिफाइंग कॉलम करना है. फॉर एग्जांपल सपोज ऐड कॉलम करते हैं अभी हमने ऊपर टेबल बनाया यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का, उसके अंदर ऑलरेडी एम्प्लॉय आईडी है ये में और डिपार्टमेंट आईडी. ठीक है. अल्टर टेबल एम्प्लॉइज ऐड सैलरी डेसिमल 10,2. तो यहाँ पे ऐड सैलरी हो जाएगा कॉलम, तो आपको स्पेसिफाई करना है अल्टर टेबल एम्प्लॉय, modify a column, alter table employee, modify column name varchar 150. तो ऊपर जो नेम था वो डिफाइन किया था वो शायद 100 था, तो उसको मॉडिफाई किया यहाँ पे 150 से. यू डू अंडरस्टैंड दिस. उसका जो साइज था नेम का उसको हमने यहाँ पे 150 किया, ऊपर था 1 सॉरी 100 था. अंडरस्टैंड? यस, all of you understand or not? Do you understand or not? तो यहाँ पे हम अल्टर कमांड का यूज कर रहे हैं. अल्टर से कॉलम को ऐड किया, अल्टर से मॉडिफाई किया, अभी ड्रॉप भी करना है जिसको उस कॉलम को ड्रॉप करना है सैलरी को. अल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप कॉलम सैलरी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों भी कमांड स्टेटमेंट जो बोल सकते हैं हम. क्यूरी में ये फायर करना ही पड़ता है आपको, क्योंकि ये क्यूरी के लैंग्वेजेस आपको पता होना चाहिए, तभी हम डेटाबेस को परफेक्टली मैनेज कर पाते हैं या अलग-अलग क्यूरी फायर कर पाते हैं. अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, so try to understanding what is the exact use of a alter.
अल्टर से हमने क्या किया, नया कॉलम को ऐड किया। अल्टर से हमने मॉडिफाई किया साइज को। अल्टर से हमने ड्रॉप भी किया कॉलम को। इतना सारा हमने अल्टर टेबल अल्टर से कमांड से किया है। अभी सपोज मुझे पूरा का पूरा टेबल को डिलीट करना है, तो उसके लिए ड्रॉपिंग अ टेबल करके कमांड है या स्टेटमेंट बोला जा सकता है। रिमूव अ टेबल एंड ऑल इट्स डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो पहले ड्रॉप टेबल और एम्प्लॉइज ऐसा देना है आपको। क्रिएटिंग एन इंडेक्स, हमें इंडेक्स बनाना है सपोज। क्रिएट एन इंडेक्स ऑन one or more columns of a table to improve the query performance. To index on one or more columns of a table to improve the query performance. Creating indexes. Create an index on one or more column of table to improve the query performance. कॉलम के ऊपर हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस इससे बढ़ सकता है। एग्जाम्पल, क्रिएट इंडेक्स IDX एम्प्लॉय टीम। क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम ये ऑन, टेबल का नाम नेम, टेबल का नाम एम्प्लॉय नेम। Creating the relationship, define the foreign key relationship between the table to enforce the data integrity. Alter table employees. Add constant key department, foreign key department ID, references department ID. Importance of schema modification. Adaptability, the business requirement changes. Schema modification allows the databases to adapt to new needs. Data integrity, by properly structuring the schema, you can enforce data integrity and ensure that relationship between the tables remain consistent. Performance. Optimizing the schema through the indexing and other modification can enhance the performance of queries. तो स्कीमा मॉडिफिकेशन के अलग अलग इंपॉर्टेंस है, एडॉप्टेबिलिटी हो सकता है, डेटा इंटीग्रिटी है एंड परफॉर्मेंस। ऑप्टिमाइजिंग द स्कीमा थ्रू द indexing and other modifications can enhance the performance of queries. Query processing and optimization. In a database management system, query processing and optimization are key components that ensure the efficient retrieval of data from a database. Query processing refers to the sequence of steps involved in converting high-level query. In DBMS, query processing and optimization are key components that ensure the efficient retrieval of data from database. Query processing. Query processing refers to the sequence of steps involved in converting high-level query like SQL into a form data can be executed by the database engine to retrieve the required data. तो इसमें क्वेरी प्रोसेसिंग होता है, तो ये एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है, converting high level query SQL into the form that can be executed by the database engines and to retrieve the required data. Steps in query processing, तो इसमें प्रोसेसिंग में कौन से स्टेप्स होते हैं, पार्सिंग करके होता है, ट्रांसलेशन होता है, ऑप्टिमाइजेशन होता है, एग्जीक्यूशन प्लान होता है
and execution time. So these are the steps for the query processing. Parsing मतलब क्या? When you write a SQL query, जब आप कोई भी SQL query लिखते हो, the DBMS first check if the query is syntactically correct or not. तो parsing में क्या होता है? It's a part of checking the statement is right or not, checking the format, syntax is there or not. This step is called as parsing. The query is broken down into the integral parts like keywords, tables, columns, and conditions. A parse tree is generated which represent the structure of the query. Example for the query select from star from student where age greater than 18. Parsing check if the select from and where. तो select में क्या है? कॉलम नेम कौन से दिए हैं? फ्रॉम में टेबल का नाम बराबर है क्या? वेयर में बराबर लिखा है क्या? These are the various statements. Keywords are used correctly and if the table student exit. Means what statement will be right or not? Syntax will be right or not? From where select ये जो है राइट लिखा है क्या नहीं ये चेक किया टेबल एग्जिट है कि को चेक किया जाता है. So this is the first steps of query process. It is a parsing, error checking. Translation. What is translation? After the parsing, the query is translated into an intermediate code that the database can be understand better. तो intermediate code बोलते हैं इसको that the database can be understand better. This steps converts the SQL query into the more structured format, making it easier to apply optimization techniques. तो कन्वर्ट किया जाता है इसको ट्रांसलेट किया जाता है with the help of intermediate code. Optimization. In these steps, the DBMS look for the most efficient way to execute the query. This is called query optimization. Execution plan. Based on the optimization process, the DBMS generates an execution plan. This plan outlines how to retrieve the data step by step, including which algorithm and access paths, like a scanning a table or using an index to use. Execution. Finally, the query is executed according to the chosen's execution plan and the result are returned to the users. तो ये 5 अलग-अलग steps रहते हैं. Execution plan is based on the optimization process. DBMS generate an execution plan. This plan outlines how to retrieve the data step by step, including which algorithm and access the path, like a scanning a table or using an index to use. Query optimization. Query optimization is the process of improving the efficiency of a query to ensure that it runs as fast as possible and uses minimal resources such as memory or CPU time. The goal is to reduce the time it takes to retrieve the requested data, especially for large databases. तो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन इसका है प्रोसेस है improving the efficiency of a query to ensure that it runs as fast as possible
the fast query to ensure that it runs as fast as possible. तो इसके अलग अलग टाइप्स आते हैं वापस क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के. फर्स्ट कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन, रूल बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन. कॉस्ट बेस्ड मतलब क्या? The DBMS estimates the cost of different query execution strategies, like using an index scan virus, a full table scan, and chooses the one with the lowest cost. Cost is measured in terms of resources like a disk I/O, reading and writing from a disk, CPU usage, and a memory. Rule-based optimization. The cost of different query execution strategy and choose the one with the lowest cost. Cost is measured in terms of resources like a I/O, CPU usage, and memory. तो कॉस्ट बेस पे ऑप्टिमाइजेशन होता है, रूल बेस्ड भी ऑप्टिमाइजेशन होता है. Was predefined rules to optimize the query. For example, it may prioritize operations like select and join to reduce the size of intermediate regions. How does the query optimization work? The query optimization work कैसे होता है? Choosing the best access path, recording the operations, eliminating the join optimization, using the best access path. The optimizer selects the most efficient way to access the required data it might use. Index scan, if there is an index on the door column, being search. For example, age in the student table. The DBMS can use the index to quickly locate relevant records. Full table scan. If no index exists, the DBMS will scan the entire table, which is a slower for large datasets. Recording operations. The optimizers may change the order in which condition and operation are executed to make the query faster. For example, applying where filter before the joining table can reduce the size of intermediate result and speed up the process, eliminating redundant operation. The optimizer removes the unnecessary steps in the query execution process. For example, it might remove the duplicate rows early they are if they are not needed in the final results. Join optimization. When query multiple tables using a join, the optimizer decides the best way to join the tables. It may choose a different algorithm like nested loop join, put for a small dataset, hash join, efficient when large databases are involved, merge join, effective when both the tables are sorted. तो जॉइन ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इससे जो भी है डिफरेंट algorithms will be there. Nested loop join, hashed join, merge tape joins are there. Example of query optimization. Consider a query. Select name age from student where age greater than 18 and department equal to IT. If there is an index on the age column, the table's DBMS, the DBMS might use it to quickly find all the students older than 18
instead of scanning the entire table. Additionally, the optimization the optimizer may first filter the student by age and then by department to reduce the amount of data processed. Importance of query processing and optimization. Performance. Optimizations Optimizing the queries ensure that the database runs efficiently, which is especially important when dealing with the large dataset. Resource efficiency. Reducing reducing the time and resources used for query saves on CPU, memory, and disk usage. User experience. Faster queries लीड टू बेटर यूजर एक्सपीरियंस क्योंकि डेटाबेस बहुत बड़ा ज़्यादा रहता है, मैसिव टाइप और मैक्सिमम रिकॉर्ड्स आर देयर, तो यूजर एक्सपीरियंस इज रियली बेटर एंड इट्स रियली फास्टर, lead to better user experience, especially in application where real time or quick data access is critical. Scalability, efficient query processing, and optimization make it easier to scale a database as the amount of data grows. फाइल स्ट्रक्चर, तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन से क्यूरी प्रोसेसिंग के स्टेप्स होते हैं। पासिंग एक होता है, एरर चेकिंग होता है, ट्रांसलेट किया जाता है, ऑप्टिमाइज किया जाता है, एग्जीक्यूशन होता है और एग्जीक्यूशन होता है। फिर क्यूरी ऑप्टिमाइज किया जाता है, ऑप्टिमाइजेशन इज देयर। यदि प्रोसेस है इट पॉसिबल टू रन फास्ट विथ यूजिंग द मिनिमल रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्स यूज करके फास्ट क्यूरी ऑप्टिमाइज करना। तो इसमें कॉस्ट इफेक्ट बेस भी रहता है ऑप्टिमाइजेशन और रूल बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन रहता है। चूजिंग द बेस्ट एक्सेस पाथ, हाउ टू वर्क द ऑप्टिमाइजेशन, recording the operation, eliminating redundant operation during the optimization. So what exactly the importance are there? Performance के लिए बहुत important है query processing and optimization. Resource efficiency is there. User experience is also better, and scalability. Efficient query processing and optimization make it easier to scale a database as the amount of data grows. Next is a file structure. So files. There are different files you have to use in a database. In a database management system, DBMS, file structure refers to the way data is physically stored and organized on the disk so that it can be efficiently retrieved and managed. It's essential for efficient data storage, retrieval, and maintenance in database. File structure. File structure in a DBMS deals with how data is stored on physical storage devices such as hard drivers, and how the DBMS accesses and organization. फाइल स्ट्रक्चर, अभी इसमें क्या होता है कि जो फाइल हम यूज डेटाबेस, फाइल स्ट्रक्चर refer to the way data is physically stored and organized on the disk that can be efficiently retrieved and managed. It is essential for efficient data storage, retrieval, maintenance in a database. File structure
File structure in a DBMS deals with how data is stored on physical storage devices. तो किस तरह से फिजिकल स्टोरेज में स्टोर किया जाता है, जैसे कि हार्ड डिस्क वगैरह है या और कुछ ड्राइव्स वगैरह वगैरह रहते हैं, and how the DBMS accesses and organizes this data to provide efficient query performance. Understanding the file structure is key to managing the large amount of data in a database efficiently. Component of file structure in a DBMS. तो जो आप DBMS में फाइल स्ट्रक्चर करते हैं तो उसके अलग कंपोनेंट रहते हैं। तो ब्लॉक्स एक रहता है, रिकॉर्ड्स रहता है, फाइल्स रहती है। तो अभी सबसे पहले ब्लॉक्स क्या होते हैं? A block is the smallest unit of data that the DBMS reads or writes from the disk. तो ये एक छोटा सा स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हैं इसको, एंड DBMS इसको रीड एंड राइट कर सकता है फ्रॉम द डिस्क. इट कंटेन द फिक्स साइज चंक्स ऑफ डेटा. फिक्स साइज रहता है इसके अंदर डेटा. डेटा फाइल्स आर डिवाइडेड इनटू द ब्लॉक्स. डेटा फाइल्स को डिवाइड किया जाता है अलग अलग ब्लॉक्स में, एंड अ सिंगल ब्लॉक माइट स्टोर वन और मोर रिकॉर्ड. एक ब्लॉक के अंदर वन और मोर रिकॉर्ड्स आर देयर. The block size is typically determined by the operating system on the DBMS itself. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से वो रहता है. तो रिकॉर्ड तो सबको पता होना चाहिए. व्हाट इज रिकॉर्ड? रिकॉर्ड इज अ सेट ऑफ related data stored as a single unit. For example, a record might represent a single row in a table. अलग अलग टेबल आप बनाते हैं, उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, तो that different rows are there. This rows is called as a records in a different row in a tables containing all the data about a specific entry. Records are stored inside the blocks, and several records can fit into the single blocks. तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉक्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, फाइल्स क्या होता है, शॉर्ट नोट के बारे में पूछा जा सकता है, राइट वेरियस कंपोनेंट ऑफ फाइल स्ट्रक्चर इन DBMS. So files like this, a file in a DBMS is a collection of blocks that store a data. A database can consist of multiple files. Database के अंदर बहुत सारे files होते हैं, each containing the different types of data. For example, table indexes. Files are used to store the actual database content, metadata, and index information. So there are different files, types of file organization. File organization determine how the record are physically arranged in a file. तो physically किस तरह से उसको arrange किया जाए. There are different ways of organizing this record, and each type of offers specific advantage for a different scenario. तो उसके अलग अलग types बताए जाते हैं. First is a heap file organization. This is unordered file organization. In this type of file, records are stored in a no particular order. इसमें ऑर्डर में नहीं रहते रिकॉर्ड्स, इसमें ऑर्डर में नहीं रहते हैं. न्यू रिकॉर्ड्स आर सिंपली एडेड एट द एंड ऑफ द फाइल. जो भी नए रिकॉर्ड आते हैं वो एंड ऑफ द फाइल में क्या हो जाते हैं, ऐड होते हैं. एडवांटेज, सिंपल एंड फास्ट फॉर इंसर्टिंग द न्यू रिकॉर्ड. डिसएडवांटेज क्या है इसका? सर्चिंग फॉर रिकॉर्ड कैन बी स्लो, and the DBMS may have to scan the entire file
to find the desired data. Use case. Small databases or situation where inserts are more common than reads. If is an order is a simple insert in a new record at the end of file, but difficult to search. Use case small database or situation where inserts are more common than reads. For example, if student record is stored in a heap file, it could be anywhere within the file, and to find it, the system might have to search through all the record. Another types of organization of file is what sequential file organization. पहले आपने देखा heap file organization. Sequential में क्या होता है? Sequentially होता है. Records are stored in a specific order, typically based on the value of one of the fields. For example, sorted by the student ID. Advantage efficient for range queries. Example, retrieving record within a certain range of values. Disadvantage inserting or updating the record can be slow because the DBMS need to maintain the order. ऑर्डर नहीं होने के कारण क्या होता है अपडेटिंग और इंसर्टिंग स्लो हो जाता है यूज केस क्या है एप्लीकेशन वेयर रिकॉर्ड्स आर प्रोसेस्ड इन अ सीक्वेंस एग्जांपल पेरोल सिस्टम एग्जांपल if the database of student is organized sequentially by student ID. To find the student with ID 1005, the DPMS can be skip the irrelevant record, speeding up the search. तो ये इसमें एग्जाम्पल है थर्ड टाइप ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज अ hash file. In hash file organization, record are placed based on a hash function applied to one of the field, usually a primary. The hash function map record to specific blocks. Advantages: very fast access to record if the hash function is well designed. Ideal for exact match queries. For example, searching by ID. Disadvantage: does not handle the range queries well and can lead to collisions. Two records mapped to the same block. Use case application where exact lookups are frequent, like searching for a specific student by their ID numbers. Example: a hash function might map a student ID 101 to block 3. So when searching for this student, the DBMS goes directly to the block 3, which is speed up the process. तो ब्लॉक्स किए जाते हैं इसके अंदर मैप स्टूडेंट आईडी 101 ब्लॉक 3 पहला हीप हुआ सेकेंड सीक्वेंशियल हुआ थर्ड हैश हुआ फोर्थ क्लस्टर्ड फाइल आउटपुट स्क्रीनशॉट लेता हूँ वेट अरे लेकिन वो लेक्चर कैंसिल हुआ ना आपका आईटीएस का मैडम ने मुझे कॉल किया था कि आप लेक्चर का ना प्रवीण कुमार यस यू अंडरस्टैंड मैंने बोला था लेकिन वापस मैसेज डाला था ना मैंने यू हैव टू नॉट चेक द ग्रुप हाँ राइट एक घंटा पहले विचार भेजा था आई नो दैट बट मैडम ने मुझे कॉल किया कि आप एंगेज कर लो सर चलेगा इसलिए मुझे लेना पड़ा
डोंट वरी रिकॉर्डिंग रहेगा तो सुन लेने का, ठीक है? ओके। नेक्स्ट इज अ क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन. In a cluster file organization, data from multiple related tables is stored physically close together. This is cluster file organization. Data from multiple related tables is stored physically close together. Is particularly useful when tables are often joined in a queries. इसका एडवांटेज क्या है? इम्प्रूव परफॉर्मेंस फॉर क्यूरी दैट रिट्राइव द रिलेटेड data from multiple tables. Disadvantage: more complex to maintain, especially when the inserting or deleting the records. Use case: application with a frequent joins between the table, like retrying the student record along with their department information. तो अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज है ये फाइल ऑर्गेनाइजेशंस के. There are different four types we discuss here. Okay. Also, the indexing the file structure is a technique. Indexing is a technique to use to improve the speed of data retrieval by creating a separate structure index that points to the location of data in the file. Think of that an index as a shortcut to find the data quickly without scanning the entire file. Primary index, secondary index, build on the primary index key of a table and ensure the record are stored in a sorted order based on the key. तो प्राइमरी की से हम sorted order की जो है record find order. Use case: fast access to the record using the primary key. Secondary index, build on the field that are not the primary key. For example, age or department. It allows quick searches based on these fields. Efficient retrieval of data based on non-primary key attributes. Importance of file structure in a DBMS. Efficient data access, proper file organization allows the DBMS to quickly locate and retrieve the required data, improving the query performance. एक सेकेंड. ओके, प्राइमरी इंडेक्स हुआ. यूज केस: फास्ट एक्सेस द रिकॉर्ड यूजिंग द प्राइमरी. जब कोई भी आप टेबल बनाते हैं तो वहाँ पे प्राइमरी की होता ही है और उसका यूज ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड एक्सेसिंग पर्पस के लिए होता है, फास्टिंग. Secondary index build a field that are not primary key. For example, age or department. It allows the quick searches based on the fields. Use case: efficient retrieval of data based on the non-primary key attribute. इसमें प्राइमरी की रहता है, डायरेक्टली हम कीवर्ड से या फील्ड से सर्च कर सकते हैं और प्राइमरी में प्राइमरी की का यूज करके हम फास्ट भी एक्सेस कर सकते हैं रिकॉर्ड को. The importance of file structure in a DBMS: efficient data access, storage management, scalability. Efficient data access, what exactly? Proper file organization allows the DBMS to quickly locate and retrieve required data. अगर आपने प्रॉपरली कोई भी फाइल को ऑर्गेनाइज किया तो क्विकली आप डेटा रिट्राइव कर सकते हो. Improving the query performance also there. Storage management: file structuring help in managing how data is stored on a disk, minimizing the amount of wasted space and ensuring that the available storage is used effectively. Scalability: as the database grows, the file structure play a vital role
in ensuring that performance remains efficient even with larger datasets. Hashing and indexing in DBMS. Hashing. Purpose. Hashing helps in a quick data retrieval by converting a key like a student ID into a quick location using a hash function. How it works. Hash function generates an address in a memory where the data is stored. Hashing and indexing in a DBMS. Hashing. Purpose. Hashing help in a quick data retrieval by converting a key like student ID into a unique location using the hash function. How it works. Hash function generate an address in a memory where the data is stored. इसमें मेमोरी में स्टोर कहाँ पे है? Yeah, signature of the hash. If student ID is 1234 and the hash function is ID percentage, the result will be 4. The data is stored at a memory location 4. Benefit क्या होता है इसका? Hashing is a fast for exact matches, like finding a specific student by ID. Limitations no useful, not useful for range of queries. For example, finding the student with ID between 1000 to thousands. तो ये एक हैशिंग important is only. Indexing is also there. Indexing the purpose indexing the speed of searches by creating an index similar to a book index on a certain column. Searching fast होता है. Example, if you create an index on the age column, the student table, the database can quickly find the student of a certain age. Creating age index on student age. Benefit क्या है? Index make data retrieval faster for searchers and range queries. For example, finding the student age 20 to 25. Limitations. Indexes requires extra storage and can slow down insert and update the operation. Benefit to limitations. Limitation in index requires extra storage and can slow down insert and update operations. This is for all about the hashing and indexing. It's also important in DBMS. And this is the last point for this chapter. So next lecture started transaction management and concurrency control recovery, chapter number 7. Okay. So I think today I have to cover this lectures here. ठीक है, यहाँ पे मैं अभी लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ आज का. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 7 नंबर वाला चैप्टर्स. ओके, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एंड क्यूरी एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है एंड रिकवरी क्या होता है, will be see in a next session. Okay, done all of you? Is it right? Yes, sir. तो ठीक है, फिर यहाँ पे अभी हम स्टॉप कर रहे हैं पिक्चर्स. Hello, sir.
यस, एक रिक्वेस्ट था सिर्फ एक, अगर पेपर पैटर्न अगर आपके पास रहेगा लास्ट ईयर या लास्ट लास्ट ईयर का तो काइंडली शेयर। पेपर्स क्या? पैटर्न, पेपर पैटर्न, तो क्या पैटर्न? एक आइडिया, हाँ, तो हमको आइडिया आ जाएगा कि हाउ टू प्रिपेयर वेल ओके, फॉर द एग्जाम्स। ठीक है, ठीक है, चलिए। आई विल चेक एंड सेंड इट, ओके? थैंक यू, थैंक यू। एनी अदर? For your side, you can be talk to me for 5 minutes only. Otherwise, left, no problem. तो यहाँ पे मैं अभी स्टॉप करता हूँ लेक्चर आज का, ठीक है? वेल, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ओके, बाय। सर एक चीज पूछना था कि अभी फिलहाल बहुत से बंदे लोग मतलब यूनिवर्सिटी जाकर के आए, हाँ, बहुत से बंदे लोग यूनिवर्सिटी जाकर के आए, तो वहाँ पे मतलब कुछ ही बुक जो है अवेलेबल है, तो ये डीबीएमएस और बाकी सबका वहाँ पे बुक्स मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? अभी उसका भी आइडिया मुझे नहीं एग्जैक्टली, हमें मैडम ने कुछ बताया नहीं कौन सा अवेलेबल है, क्या क्योंकि अवेलेबल है। कैसा है ना सर, अभी डायरेक्टली अभी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन तो मैम से कर सकते हैं नहीं, क्योंकि मैम बहुत रेयर जो है रिप्लाई करती हैं। और इस वजह से मैं तुझे कंफर्म कर रहा था कि अगर मान लीजिए आप कुछ बता सकते हैं क्या? हमारा भी जाना नहीं रहता ना, एक्चुअली हम कॉलेज में नहीं रहते नहीं, हैं। अभी कैसा कि मैंने बताया ना आपको कि मतलब मैम रिप्लाई नहीं देती है, प्लस अगर सीन में करेंगे तो किसी से रिप्लाई देंगी वो, ठीक है? तो इनकेस ऐसे अगर आप पूछ सकते हो क्या डायरेक्ट, मतलब आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो क्या ऐसे, तो फिर कैसा ना कि वहाँ पे फिर जाना बेटर रहेगा, फिर वहाँ पे जाके फिर मतलब एटलीस्ट मेरा काम हो जाएगा, वरना फिर कैसा फिर जाओ फिर वापस चले आओ, कुछ वहाँ पे काम ना, मतलब बुक्स अगर अवेलेबल ना तो फिर मतलब नहीं ना जाके वहाँ पे, इसलिए पूछ रहा था मैं आपसे। यस, 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 ठीक है। कौन से बुक मिले आपको? सर ये अपना डीबीएमएस का, सी प्लस का, और क्या कहते हैं ये, आईटीएस का, ये इंडियन नॉलेज सिस्टम का। ओके, टोटल 11 सब्जेक्ट सर, अगर मतलब ऑलमोस्ट जैसे अगर 6-7 का मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, बाकी तो फिर कैसा कि या 5 भी मिल जाए फिर भी इनफ है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। एक बार तो अभी, कंफर्म कर लेंगे ना, तो कैसा ना सर कि फिर वहाँ पे जाके फिर मतलब वो बेनिफिट होगा ना वहाँ पे जाने का। यस, यस, श्योर, श्योर, ओके, ओके, डेफिनेटली आई विल बी आस्क मैडम एंड सेंड द ग्रुप के मैसेज। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हेलो ओके, सर। हाँ बोलो। हेलो। हेलो। क्या? हाँ बोलो। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि आप हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करोगे क्या मीन्स प्रैक्टिसिंग के लिए? इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस? हाँ मीन्स जस्ट प्रैक्टिस। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब नहीं हो रहा है सर ऐसे। अभी 1 मंथ ही बचा है, सो दैट्स व्हाई। आई विल चेक एंड सेंड इट, ओके? इम्पोर्टेंस। अच्छा, तो थैंक यू। थैंक यू। यस, एनी अदर? ओके, तो विल बी लेफ्ट नाउ। यस यस, थैंक यू फॉर द हेलो सर, लेक्चर। हेलो यस सर। थैंक सर, यू। थैंक यू। हाँ, यस, कौशल। सर वो एक डाउट था कि जो एग्ज़ाम होंगे उसमें जो ये चैप्टर्स के पीछे क्वेश्चन दिए वैसे ही आएंगे ना क्वेश्चन? इस चैप्टर के पीछे दिए हुए हाँ, मतलब लाइक आ सकते हैं, तो वो भी आप प्रिपेयर करके रखो। और मतलब दो, कि सर देखो, जैसे फर्स्ट चैप्टर के पीछे कुछ 7-8 क्वेश्चन है, फिर सेकंड चैप्टर खत्म हो गया फिर 7-8 क्वेश्चन है, तो वैसे क्वेश्चन आएंगे ना? ये वाले ना, ये वाले आगे ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन आपको आइडिया आएगा टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे देखो, व्हाट इज जॉइंट्स, एक्सप्लेन इट्स टाइप विद एग्जांपल। तो हमें कभी-कभी चैप्टर हम पढ़ते लेकिन आइडिया नहीं आता कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यू हैव टू पूजा आल्सो, यू हैव टू रेफर दिस क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, और सम इम्पोर्टेंट आल्सो। इसको भी आप गो थ्रू कर लो, या क्वेश्चन वाइज आप प्रिपेयर किया तो भी अच्छा रहेगा, या पूरा रीड किया तो भी अच्छा रहेगा, ठीक है? ओके सर। सर पेपर किती मार्क्सचे असणार? क्या-क्या? पेपर किती मार्काचे असणार? तुम्हाला पॅटर्न्स वगैरे नाही दिले का गाईस मॅडमनी? दिलेत त्याच्यात, पण त्याच्यात 30 मार्काचे, मग 30 मार्काचेच असणार. 30 है का 40 है? 30 आहे. 30 है. 30-30 पैटर्न है का तुझा? काय बोलताय?
पॅटर्न कसा आहे 30-30चा आहे का तुमचा? नाही पॅटर्न 30चा नाही 30 आणि 20चा आहे 20 मार्क्स इंटरनलच दाखवतात आणि 30 मार्क्स एक्सटर्नल. एक्सटर्नल हा ओके. आणि प्रॅक्टिकल? प्रॅक्टिकल ते वेगळे आहेत त्याचे जर्नलचे सॉरी 20 मार्क्स वेगळे असं दाखवतात आणि 30 मार्काचं प्रॅक्टिकल एक्झाम म्हणजे 50 झाले. हा तसंच असेल ना मग 30 मार्काचं एका ठिकाणी एकदा चेक करतो परत एकदा. युनिव्हर्सिटीमध्ये काय आहे तुमच्या? ओके. बरं ठीक आहे ते पण क्लिअर करतो आणि बुक्सही क्लिअर करतो सांगून. हा ठीक आहे. चालेल. ठीक आहे. एनी अदर्स? Shall I left now, all of you? Yes, no Yes, questions. sir. No questions. Okay. Bye. Good day. Good night. 7th वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे.